Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and this is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। हम जल्दी ही उनसे बातचीत शुरू करेंगे। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Second quarter GDP data shows recovery in the COVID-19 hit economy, but still log contraction of 7.5%. Key domestic stocks slipped marginally. Sensex ends at 44,150. Nifty settles at 12,969. Broad indices at the BSE gain around 2%. And oil prices remain steady ahead of OPEC Plus meeting. वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में सुधार दिखा, लेकिन फिर भी 7.5% की सिकुड़न हुई दर्ज। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 44,150 और निफ्टी 12,969 पर हुए बंद। बीएसई में विस्तारित सूचकांक लगभग 2% की वृद्धि में रहे और ओपेक प्लस की बैठक से पहले तेल के मूल्य स्थिर रहे। In our top story, gross domestic product GDP of the country for the second quarter of the financial year 2020-21 logged a contraction of 7.5%. According to the government data released today, electricity grew at 4.4%, while agriculture grew at more than 3%, while manufacturing grew 0.6% as compared to a contraction of more than 39% in the first quarter. The rebound has been seen after the economy after dismal performance in the first quarter of the current fiscal. The first quarter saw a GDP contract by nearly 24% due to COVID-19 pandemic hit economic slowdown. अर्जुन, इनफैक्ट जैसा आपने स्टोरी में ही पढ़ा है कि जो पहला तिमाही थी उसमें 24% के करीब कॉन्ट्रैक्शन हमने जीडीपी में देखा था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और सभी का अनुमान था, सभी इकोनॉमिस्ट का, इनफैक्ट आरबीआई का अनुमान था कि इस जो दूसरी तिमाही है उसमें -8.6% आरबीआई का अनुमान था और 8 से 10% तक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान अधिकांश इकोनॉमिस्ट ने दिया था। उसे देखते हुए जो कॉन्ट्रैक्शन का 7.5% आंकड़ा आया है Q2 का, वो दिखा रहा है कि जो रिबाउंड है वो उम्मीद से भी बेहतर है। Well, we also heard the comments by G. Subramanian, the chief economist. He said that this V-shaped recovery, which is in the process of taking shape right now, if you compare the previous GDP contraction of 23.5% for the April to June quarter and compare it to a 7.5% contraction in the July to September, even though it is technically a recession, but as compared to the previous quarter, it's a definite improvement, but it's coming with a caveat, the warning that this V-shaped recovery should be seen, and it is seen in its proper light, and the productivity should continue along the same lines. And we must also remember that the government is trying its very best by ensuring that the fiscal deficit is remaining under control despite the revenue gap. In fact, Arjun, अब हमारे साथ फोन लाइन पर श्री पुनीत जैन जुड़ गए हैं, जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। पुनीत, आज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़े आए हैं सेकेंड क्वार्टर के, कॉन्ट्रैक्शन दर्ज हुई है 7.5% की, और जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे स्टूडियो में कि सभी जो अनुमान थे इंक्लूडिंग आरबीआई का अनुमान, उससे कहीं एक बेहतर ये आंकड़ा आया है। क्या आप कहेंगे इकोनॉमी की रिकवरी के बारे में, क्या आपको प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं आज के आंकड़ों को देखकर? सोनू, देखिए, ये बिल्कुल ये जो आंकड़े आज आए हैं जीडीपी के, ये आंकड़े सभी अनुमान से बेहतर हैं, और ये बात, इसका कुछ हद तक इंडिकेशन हमें मिला था जब
जो सितंबर क्वार्टर के कॉर्पोरेट नंबर्स आए थे, यदि आप कंपनीज के जो नतीजे आए उनके देखें तो वहां पर ये इसका अंदाजा होने लगा था कि शायद जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बेहतर है हमारी उम्मीद से। लेकिन मेरे ख्याल से जो अब आंकड़े आए हैं ये तो बिल्कुल दर्शाते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी उम्मीद से बहुत बेहतर है और हर दिशा में, हर सेक्टर में है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है, बेहतर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला क्वार्टर है, जो दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर, ये जो रिकवरी है और भी बेहतर होगी एंड फाइनल फिगर विल बी मच बेटर देन द -10% फिगर जो एक्सपेक्टेशन थी या फोकस था उससे बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि सीक्वेंशियल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कब तक आपको उम्मीद है कि पॉजिटिव टेरिटरी में जीडीपी ग्रोथ वापस लौट जाएगी? सुन देखिए, डेफिनेटली जो मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो हम देखेंगे ही दिसंबर क्वार्टर में और शायद मार्च क्वार्टर में, लेकिन जो ज्यादातर अगर हम फोरकास्टिंग मॉडल्स देखें तो उनका अनुमान है कि जो नेक्स्ट ईयर है यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 उसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10% से ज्यादा यानी +10% या +11% हो सकती है, ज्यादातर ऐसा अनुमान है। और यदि हम इन पूरी पिक्चर को देखें यानी इन 2 वर्षों को साथ मिलाकर देखेंगे तो शायद द जीडीपी फिगर विल बी बैक टू द प्री कोविड लेवल्स। We are discussing about productivity when we talk about the GDP numbers. Puneet, the government is also under a challenge to maintain its strong revenue position because there is a revenue gap when you look at the non-tax revenue figures and the tax revenue figures as compared to the previous year. Clearly, there is a gap. And how do you see the government bridge that gap, especially with the recovery that we are seeing in the economy right now? So Arjun, if you look at the revenue picture, the expectation was that again based on forecast that GDP will fall by more than 10%. The belief was that we will see a very sharp fall in revenues, and probably there will be a shortfall of 4 to 5 lakh crores from the figure that we had expected in the last budget. But I think going forward, if you look at the way the GST numbers have been coming in, the way economy has been picking up, and the fact that the taxes on fuels have gone up a lot and they're contributing, and the demand for fuel is back to the pre-COVID levels, but the taxes are much higher. So clearly, I think the GDP, the ultimate figure of revenue deficit that we have, may not be very large. And I think government has already planned in terms of borrowings that it has for the current year. I think the revenue shortfall will definitely be much higher than what we had expected in the budget, but I think the figure will not be as high as what it was feared, no? Because that shortfall was estimated to be more than 5 lakh crores. I think it will be less than that. पुनीत, अगर हम बारीकी से फिगर्स को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो Q1 में -39% फिगर आई थी, 39% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वो +0.6% आया है Q2 में। हालांकि बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में मैन्युफैक्चरिंग का आना ये कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। बिल्कुल ठीक कहा सुनो आपने। और मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इकोनॉमी की पिछले 2-3 वर्ष की परफॉर्मेंस देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी लैग किया है भारत में। और इनफैक्ट बिफोर द पेंडेमिक स्टार्टेड, उससे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग में हम देख रहे थे काफी स्लो डाउन था और जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल पिकअप नहीं कर रही थी। यदि हमें जॉब्स को इम्प्रूव करना है, हमें कलेक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, पर्टिकुलरली जीएसटी है जहां पर, वो इम्प्रूव होना है, तो ये जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेटर परफॉर्म करे। और उसकी यानी जिसका कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार का जो एक नारा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी जो भारत में ही बनी हुई चीजें उसी का हम ज्यादा उस कंजम्पशन करें, उसको खरीदें, तो उससे ना सिर्फ एक जो इम्प्रूवमेंट इन जीडीपी है, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, टैक्स कलेक्शन फिगर्स उससे काफी बेहतर होती हैं, क्योंकि उससे हर क्षेत्र से आपको टैक्स पेंशन होती है वहां पर। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और काफी वीक रहा है पिछले कई वर्षों में। अब
अभी हम देखा है हाल में यदि आप देखें तो कई पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ आए। सबसे महत्वपूर्ण उसमें पॉलिसी जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI की जो पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में, उसको अब वहां पर थोड़ा बेहतर माहौल देख रहे हैं। देखिए, ये बड़ा लंबा रास्ता है। मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट आना काफी कठिन रास्ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये we should be able to achieve this. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about the key macroeconomic data released by the government today, the GDP data, with our senior economic journalist Puneet Jain. Puneet, we're discussing about how there has been an improvement in the consecutive quarter where it has been a contraction of only 7.5%, and there were expectations that it could be a lot worse. And now we're also seeing that the revenue gap is being shortened and not widened. So the opposite effect is taking place. So productivity is getting converted into revenue earning as well from each sector. Then we're also talking about how industrialization is picking up with the core sector data. We're also looking at manufacturing and electricity, which grew by 4.4%. But we are also seeing reforms on the part of government, whereby agriculture has grown by more than 3%. And this is being marked by what we have been doing on Market Mantra in terms of productivity. We've been seeing that there have been higher productivity of key food and drink items. So how, do you see this sustainable, and how do you see this in the short to medium term? So, Arjun, like you mentioned, I think we have to focus on where we are seeing very fast recovery and whether it indicates what is the long-term trend. So clearly, I think the figure that you mentioned about electricity consumption, that is extremely important. Not only because electricity is a basic component in most of the economic activity. So whether it's services or it is manufacturing or any other walk of life, electricity consumption indicates the kind of activity which is there in that sector. And we've seen electricity consumption grow steadily in the last few, I would say, fortnights or last few months, I would say. And I think that kind of tells us a story of how the economy is recovering throughout this period. Of course, there are many, I would say, challenges in this recovery story, because if you look at the core sector data, it is again kind of slipped back into the red. It was inching up a little bit in the last month, and then it kind of slipped. But I think so we will have a story where we will see probably the economy will pick up, there will be a few challenges, and then we'll see some kind of a slippage there. However, if you look at the longer term trend, then I think the recovery is stronger than what we had expected, and I think it will take place much faster. It is not as if that we are waiting till next year now, because earlier the expectation was, the forecast was that this year we will see a GDP contraction of around 10 to 11%, and then only next year there will be some kind of a rebound on year-on-year basis. But I think if you look at the high frequency indicators, they are telling us that recovery is taking place now, and as things progress, we will probably see a very good quarter for December ending and therefore for March. पुनीत, जैसा आप कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सितंबर अक्टूबर में बहुत उत्साहजनक हैं, फिर जीडीपी के जो आंकड़े आज आए हैं वो भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो हम पिछले कुछ महीनों से डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक टर्म्स सुनते आ रहे थे, वो स्थिति अब वापस लौट के नहीं आएगी?
देखिए, बिल्कुल सो डिमांड शॉक जो हमने टर्म इस्तेमाल करी कि बिल्कुल डिमांड जो वो थी बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, वो डेफिनेटली सिचुएशन नहीं है। यदि हम इन थोड़े और आंकड़ों को अगर हम ब्रेकअप करके देखें तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो अभी भी काफी उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा है हमने इवन फॉर लास्ट क्वार्टर 11.3% प्राइवेट कंजम्पशन में कॉन्ट्रैक्शन रही, यानी जो अभी कंज्यूमर डिमांड है वो वापस उतनी स्ट्रांगली नहीं बढ़ी है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो जिसे इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं वो काफी कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट दोबारा से बिजनेसेस ने करना शुरू करा है, विच इज अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर। क्योंकि यदि बिजनेसेस अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बात साफ है कि वो आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। तो डेफिनेटली public consumption, which is driven by government expenditure, प्राइवेट कंजम्पशन, अभी इसमें बाउंस बैक आना बाकी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो हम उसमें देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग रिबाउंड है। और इन्वेस्टमेंट डिमांड के संदर्भ में रिफॉर्म्स का जो मोमेंटम है, वित्त मंत्री ने कहा है वो जारी रहेगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ सकती हैं बजट में। सो ये जो एक आर्थिक वृद्धि का सिलसिला जारी रहे, उसको और बूस्ट मिले, उसके लिए आपकी क्या विश लिस्ट होगी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सरकार ने काफी कदम उठाए हैं जो बहुत डिफिकल्ट कदम थे, जैसे लेबर रिफॉर्म्स उन्होंने करे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव दिया है। अभी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मैं कहूंगा थोड़े सेंसिटिव हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हैं कि भाई बिजनेसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जमीन चाहिए, वहां पर फैक्ट्रीज लगनी चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ा जो हमारे देश में एक रिक्वायरमेंट है वो है कि स्टेट लेवल पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बना पाती है एक नेशनल लेवल पर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट लेवल पर होती है। और स्टेट लेवल पर जो लॉज हैं वो कभी कभी उनको उतने सपोर्टिव नहीं होते या उतना सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस स्पिरिट में। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर ये पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होना और उसी स्पिरिट में उनको सपोर्ट करना, वो अभी मेरे ख्याल से दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। Puneet, finally and very briefly, what is your take on the next quarter in terms of GDP figure? So, Arjun, if you look at the expectation, I would say that market has expected GDP to keep contracting technically for 3-4 quarters. Initially, it fell by about 23%. Then we had expected 10-11% contraction this quarter, and approximately around that level, 7, 8, 9% level. So overall, we are expecting about 11% contraction in GDP. My own sense is that if you look at the trend and if we expect the trend to continue, then contraction going forward maybe only 5-6% in the next quarter, and probably we'll be back to pre-COVID levels in GDP activity by March quarter. आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। वैश्विक बाजारों में वृद्धि के बावजूद प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.25% की मंदी से 110 अंक कम होकर 44,150 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.14% की मंदी से 18 अंक गिरकर 12,969 पर बंद हुआ। बीएसई में विस्तारित बाजार पर नजर डालें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.91% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 2.4% के उछाल पर बंद हुआ। Key domestic indices today fell marginally even as global stocks were up. Sensex declined 110 points or 0.25% to settle at 44,150. The NSE Nifty 50 index also fell 18 points or 0.14% to settle at 12,969. The broader market at the BSE outperformed the Sensex as the BSE mid-cap index surged 1.91%, while the BSE small-cap index zoomed 2.4%. In the Sensex pack, shares of 12 companies climbed while 18 logged losses. Asian Paints was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by Titan, which gained 2.3%. Tech Mahindra climbed 2.2%, while Tata Steel and Bajaj Finance rose around 1.6%. On the other side, Power Grid declined 2.6%, HCL Tech fell 2.4%, and ONGC slipped 2.1%. Axis Bank and TCS slipped 1.5%. In sectoral indices, 14 out of 19 sectors climbed. The realty sector gained 2.7%. Consumer durables climbed 2.4%, and consumer discretionary goods and services rose 1.6%. Shares of the auto sector
sector climbed 1.5%. On the other hand, energy sector fell 1.1%. Tech ended 1% down and IT declined 0.9%. Telecom slipped 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,768 companies gained, 1,031 declined, 183 remained unchanged. Puneet, how is the market going to react with the release of the GDP figures? But let's wait for the expert to respond to that. This is after a very short commercial break, so please stay tuned. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. Puneet, with the release of the GDP data after the closure of the market today, how is the market going to react in the coming week, and how do you see the market movement for this week when you correlate the two? So, Arjun, if you, the numbers that we've got on economic front are far better than expected. So, normally I would have said that, or normally one would have anticipated that market would react very positively to these numbers. Definitely market will react positively. However, I think market already knew these numbers in a way, because we have seen the index and the large caps rise very sharply in the last 1 month. To some extent, market kind of knew that the economic numbers are going to be much better. That is usually the trend. However, I think the significance of these GDP numbers is great for mid-cap and small-cap stocks, because usually we have seen that whenever GDP improves, the benefit to small caps and mid caps is disproportionately larger. So while, of course, the markets have reacted in terms of large caps and they anticipated the numbers and they grew, I think what we'll see is the growth of this mid cap and small cap rally going forward. Today, of course, again, mid caps and small caps are really outperformed the large caps, and I think that divergence or that trend, that the broader market will do much better than the handful of stocks which have risen so far, I think that trend will continue. तो आपको लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी वैल्यूएशंस भी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड फॉर इन्वेस्टर्स मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा बेटर ऑप्शंस भी हैं? बिल्कुल सुनो, देखिए जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं ज्यादा, इसको हम रिस्क ऑन ट्रेड यानी ज्यादा रिस्की स्टॉक्स कहते हैं। इसमें हम बढ़त भी ज्यादा देखते हैं, जब गिरावट आते हैं वो भी ज्यादा होती है। तो नॉर्मली लोग सेफ्टी के लिए लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं और रिस्क कम है, तब वो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स की खास बात यह है कि आपको वहां पर वैल्यू की कंपनी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप बेहतर वहां पर रिटर्न्स कमा सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है यदि मार्केट्स में गिरावट देखेंगे। Briefly, Puneet, was there profit booking today? Profit booking definitely in select stocks, because the stocks which had gone up a lot in the last few months, I think there was profit booking there, and that money got rotated into small caps and mid caps. We must see this balance, because until now, most of the investors were going for safety. They wanted to invest in large caps. But now when they feel that the broader markets will do better and GDP and economic numbers will be better, they are booking some profit in the large caps and they are reinvesting that money into small caps and mid caps. पुनीत, एक और मेट्रिक है जिस पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। FPIs ने नवंबर में रिकॉर्ड 60,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट किया है भारतीय बाजार में। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है अभी की तेजी के लिए और आगे भी जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली फिगर है और FIIs ने अभी तक का जो सबसे बड़ा निवेश, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भारतीय बाजारों में, वो इस महीने में की है। एंड वो हमें बताती है कि उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए, उन्होंने पैसा लगाया है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में उस पैसे पे वो कमाई करेंगे, उस पैसे पे उनको मुनाफा होगा। तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ एक फिगर है, ये आने वाले टाइम के समय के लिए एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि क्या बाजारों में वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 74 रुपए 5 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में ये मंदी प्रमुख रूप से घरेलू बाजारों में गिरावट के कारण आई। दूसरी तरफ 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.02% की मामूली वृद्धि से 91.98 पर दर्ज हुआ। डॉलर सूचकांक 2 महीने से अधिक के सबसे निचले स्तर के करीब है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। हल्के कारोबार में एशियाई बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। चीन से जारी उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों से आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में तेज सुधार की आशाओं को बढ़ावा मिला। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% की वृद्धि में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग प्रत्येक 0.3% की बढ़त पर थे। जापान का निकेई सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा, लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की मामूली गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला जुला था। जर्मनी का डैक्स 0.5% की बढ़त पर था, लेकिन फ्रांस का कैक 0.2% के नुकसान पर था और लंदन के फुटसी में 0.5% की गिरावट चल रही थी। आपको लगता है कि बाजारों के लिए जो वैक्सीन पर जो प्रोग्रेस हो रही है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? बिल्कुल। देखिए सोनू, जो एक फियर है पेंडेमिक का और जिसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ी गिरावट आई है, वो तभी पूरी होगी जब वैक्सीन आएगी और लोगों को वो वापस एक फ्रीली वो बिजनेस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हालांकि हम सेंटिमेंटली बाजारों में काफी बढ़त आई है, लेकिन रियल ग्रोथ इन कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब ये वैक्सीन सभी के लिए अवेलेबल होगी और ज्यादातर डर जो पैंडेमिक का है वो जब खत्म हो जाएगा तभी हम ग्रोथ देखेंगे। उसके लिए वैक्सीन का आना बहुत जरूरी है। Now, Puneet, very briefly, we're seeing the dollar valuation rise up against global currencies, including India, if you look at the market today. And correlatively, we're also seeing the value of precious metals in the market, gold and silver, has fallen. Why? Very briefly. So, dollar index is now at almost recent lows. We are looking at a 92 level for dollar index. It remains weak. I had said earlier that if we get a Democratic president in White House, then dollar is expected to remain weak. There will be some short-term spurts at point of time, but I think long-term trend for dollar is weak for the time being, particularly in case of India, because we have very huge foreign exchange reserves, about $560-70 billion. So I think dollar will remain weak vis-a-vis the rupee and of course vis-a-vis major currencies in the world. आपने मेंशन किया प्रेशियस मेटल्स को, तो देख लेते हैं कि उनका क्या प्रदर्शन रहा। सोने का मूल्य आज 54 रुपए की मामूली बढ़त में रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 48,571 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, लेकिन चांदी 90 रुपए की मंदी से 59,783 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,811.60 प्रति आउंस पर था और चांदी $23.35 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुनो। And before we close, a reminder of the headlines. Second quarter GDP data shows recovery in the COVID-19 hit economy, but still log contraction of 7.5%. Key domestic stocks slipped marginally. Sensex ends at 44,150. Nifty settles at 12,969. Broad indices at the BSE gain around 2%. And oil prices remain steady ahead of OPEC Plus meeting. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market